अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपको। जी मियां साहब, आखिर क्या वजह है, इन्हें क्या जरूरत है ये कहने की कि आपने और बड़े मियां साहब ने इनसे पैसे लिए? मरने वाला झूठ तो नहीं ना बोला। वो पहले ही बेचारे इंतहाई बुरी हालत में है। प्लीज कंट्रोल रखिए अपने आप को। कबर में लाते हैं बताएं। मियां साहब तुसी जोर ना बोले भी तो इन्हां दा कत्ल तुहाडे ते पै जाना। कतल पवे ना पवे उन्हें उठ के तार ते बह जाना। वैसे सर गौर ना वेखो, सलीम अल बेले दा अब्बा ही लग रहा। अच्छा जी, उनसे बात होगी। ये बताइए कि किस किस को आपने पैसे दिए? 35 लाख रुपया। नवाज शरीफ साहब को मैंने अपने हाथों से दिया। वाह, तो तुसी चुक लिया सी। अच्छा सबसे बड़ी करप्शन का इंतकाम आपने बोले आपकी किस आप बताइए, आपने बहुत अच्छा काम किया था। भैया ना 25 लाख की वसूली क्यों किया? नहीं सही बताएं, आपने पैसे लिए या नहीं? यस और नो? अच्छा क्या बताया जब मैंने गेट स्टैंड लाया तो बड़े मियां साहब नो ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की नई केस लेख में आज रात जियो एंटरटेनमेंट पर आज सहर कामरान की हरकत के बारे में उसकी बीवी किरण को सब कुछ बता देगी। के बारे में उसकी बीवी जियो एंटरटेनमेंट पर आज सहर कामरान की हरकत के बारे में उसकी बीवी किरण को सब कुछ बता देगी।
hide? Do you hide? Do you hide? Huh? Can you stop? Oh, okay, all right. I'm Hasina. We family of Yadu. We the family of Yadu. Nice to meet you. He said if you don't mind, you're gonna be like you. Oh, I don't mind. My bad. Why are you taking it? I'm taking it video. So must I just go with what's in a time? Media room. Okay. Sorry.
Sorry, the media on the side. The media on the side. Hello. No. Wait, come here. We're going to go through the corridor. The media afterwards. Come here. Maybe we'll go later. But the media room. Sorry. Media room. Afterwards. After what? You don't know about the The media room afterwards. But what are we doing here? He's going to walk them down the aisle and screw them back. We're the organizers, right? We're not opening yet. We're opening मैं तो अपने तौर पे खबरनाक के फोरम से एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि जब तक प्रूव ना कर दें ये साफ उस वक्त तक आप बेकसूर हैं। आपने हम हुस्न ज़न रखते हैं। आप अगर कह रहे हैं कि आपने पैसे नहीं लिए तो हम मान रहे हैं कि आपने भाई आप जो होते चले जा रहे हैं आपने प्रूव करना है वरना आपके ऊपर मैं आपको कहता हूँ कि इसके पास कोई सबूत नहीं है। तू पैसों की बात करता है 25 लाख रुपए की। मुझे एक बात तो इस तरह ये फिकल पैसों वाली है भाई आप ही बताए ना वैसे बाकी इसलिए जिम्मेदारी दिखा के आप स्कूलों में फीस माफ करवाते हैं। आप बताइए कि आप एक मामूली क्लर्क से Pull up. That's right. Yeah, it's a media room. Okay. This is my husband. How are you? Let's go, please. You good? Thank you, Nat. रेडियो में बट्टे डालने में कुछ हाथ आपका भी था। करप्शन कल्चर Only media in the media room. Okay, let's go through. Let the media go in. Only media, please. How are you? Back. ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਰੰਗੇ ਆਸਫੀਅਤ दूर करा चाचा। अच्छा यूनुस हबीब साहब आपने फरमाया था ना ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਚਾਚਾ ਜੂ ਨਾ ਕਹੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ यार प्लीज जिन्ना कमजोर है सिर्फ यूं करो। कहा जाता है कि जेल जब भी आप जाते थे जरदारी साहब आपको देखते कहते थे ओए चाचे किधर हो तुम। और नून लीग का कहना है कि इन दोनों के जरदारी साहब और इनके चचा भतीजा के ताल्लुकात हैं। वाह ये किस हद तक दुरुस्त है? वो मुझे बहुत प्यार करते थे, चाचू चाचू कहते थे और कहते थे हरीड़ का मुरब्बा खाओ हरीड़ का। ਇਹੋ ਜਿਹੇ गुजरात बड़ी शर्म और अफसोस की बात है कि हम साया मुल्क में तजिया निगाह कह रहे हैं कि मेहरान गेट ने पाकिस्तानी सियासतदानों और जनरलों को भाड़ का रूप दे दिया। भांड का रूप दे दिया में तजिया निगार कह रहे हैं कि मेहरान गेट ने पाकिस्तानी सियासतदानों और जर्नलों को भांड का रूप दे दिया। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ बैंक लौट के होने च बैठे बस उड़ीकन लिया। ना तौर पर हाँ जी गुलाम इसाक खान नजर आ रहा है।
अच्छा यूनुस हबीब साहब, कहते तो चाचे किधर हो तुम? और नून लीग का कहना है कि इन दोनों के जरदारी साहब और इनके चचा भतीजा के ताल्लुकात हैं। वाह, ये किस हद तक दुरुस्त है? वो मुझे बहुत प्यार करते थे, चाचू चाचू कहते थे, और कहते थे हरीड़ का मुरब्बा खाओ, हरीड़ का। मुझे गुजराने चिड़े टंगे होंगे को भांड का रूप दे। मेहरान गेट ने पाकिस्तानी सियासतदान और जर्नलों को भांड। बड़े शर्म और अफसोस की बात है कि हमसाया मुल्क में तज्जिया निगार कह रहे हैं कि मेहरान गेट ने Morning, everyone. Thank you. We want to do this in an orderly way, so I'll ask the press to please respect the process. We'll give you about 2 or 3 minutes to just put your खुद नज़रात। आज हमारी डिस्कशन का मौजू वो मसाइल हैं। पैसे भेजे हमने मकान, हक बनता है। फिर हमने उसको कहा भाई हमने इस कोर्ट में ये केस लगा है, सिर्फ इसको लटकाना। पानी जाता है, वो कहता 5 लाख रुपया। पार्सलोना से मैं हूँ। रहमान मलिक साहब से इस हवाले से 70 दफा बात हो चुकी है, लेकिन ये तब्दीली नहीं। जनाब अमरीका ही जाते ने, यूरोप जाते ने, सऊदी जाते ने, रातों रात अमीर बनते चक्कर चलने ने, पैसे कमाते ने। साडे गरीबां दा भी को हक है। So that it's fair for everyone, and that all cameras can get their pictures. Thank you. Right. Thanks, everyone. As the Global Sumud Flotilla and the Global Movement to Gaza, and the ground team from South Africa, which was made up of a number of different solidarity organizations and trade unions, we welcome the media today for this press conference, but mostly we are welcoming our comrades who were part of the Global Sumud Flotilla, which was intercepted, we know, in international waters illegally. But today we want to hear from our comrades. I know they are tired. There are 6 comrades that were part of the flotilla. There are also 3 additional comrades with us here who were meant to join, but for circumstances of space on the boats, they returned and hopefully will join the next flotilla. And just to give you an update, that the Freedom Flotilla that sailed yesterday was intercepted this morning at 4:30. So another 180 people have been illegally detained about 120 nautical miles from the Gaza coast this morning. But the flotillas will keep sailing. I'm going to hand over to Comrade Manga Mandela to present to us just a quick report, and then I will manage the questions from the photographers. You'll identify your
organization, your institution that you work, and give your name and then. साढ़े ने भी कोई छटना थोड़ा बहुत तुम क्या उच्चकों को सपोर्ट कर रहे हो, चोरों को? उच्चका के असि गरीब है, उत्थे जाके 8 घंटे काम करते हैं, इन्ने पैसे कमाते हैं, तो असि तो 16 घंटे काम करके इन्ने कमाने हैं। आप हैं कि अपना प्रोफेशन क्या आपका? मैं फ्रॉड जी PhD की थी जनाब, खड़े नहीं जाना। धूप मरने का मकाम है, मुल्क की बदनामी का बायस है आप। वो दरियावां दा पानी नहीं वेच दिता, साढ़े तो इतने बड़े फ्रॉड ने, अभी तो छोटे छोटे फ्रॉड हैं, इन्हें एयरपोर्ट से उतरते हैं खीसे टूटा हुआ दिल who were part of global Sumut float. पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा रियाज ने कहा है कि वहीदा शाह ने थप्पड़ नहीं मारा था बल्कि सिर्फ पुश किया था। The thousands of ordinary women and men न तो वो टप टप मुंह ना कीते this cause. और सही गल है शाह जी ने First and foremost acknowledge those ordinary women and men that made खबर है कि मलेशिया की खातून वजीर करप्शन के इल्जाम में मुस्ताफी। flotilla possible. They always operate in the shadows. खबर है कि मलेशिया की खातून वजीर करप्शन and recognized. We want as a collective to thank you for having come together and ensured that we were able to see this mission through. Let me also acknowledge our donors. करप्शन के इल्जाम में मुस्ताफी। मैं पहले और लता बांधी Many of us have no resources to see this work through. Yet, with the support of our donors, we were able, as South Africa, to have a boat to carry us to the mission. I therefore want to thank the donors who have supported us and made sure that we were able to be part of this mission. Their names always remain in the shadows and they never get acknowledged. In April 2024, we were stuck in Istanbul with the Freedom Flotilla and we were never able to sail. With their determination, their support, we were able to put together the Global March to Gaza, where we mobilized 4,000 activists. We flew to Cairo, those that many खबर है कि एक जाली नाबीना भिखारी जुआ खेलते हुए गिरफ्तार। were even denied the opportunity to even access Cairo. Egyptian Air cancelled the flight here in OR Tambo, preventing many of our comrades from going to participate. Those that eventually made it
were first denied entry at Cairo airport, but many of us could only get to the second checkpoint. Therefore, we failed to get to the Rafah border crossing and get the much needed humanitarian aid. But what is worth noting about that particular mission is that this is what Egypt and the Egyptian government has been saying it's supporting and calling. They called for an immediate ceasefire and the opening of the Rafah border to allow humanitarian aid to flow freely into Gaza. Yet when we came to support their position, they denied us the opportunity to get there. ये तो मुकाबला हुसन से चला गया देखो We failed to realize the mission by land. मेरी मंगनी तो सुन के चुप ही होगा मैं तो मेरी मंगनी The global march to Gaza मेरी मंगनी हो रही है करीब and the global कुड़ी मरी नहीं बात सुनो हैरत मरी बात सुनो हैरत की बात नहीं है, किसने तुम्हें बेटी दी है? नहीं बात सुनो हैरत की बात नहीं, किसने तुम्हें बेटी दी? अच्छा मेरी नकलें ना उतारा करो। ये गली बात है कालम नगारी was born from a need of each country to mobilize boats so we can have thousands of boats sailing to Gaza. We took that upon ourselves on returning to South Africa with ordinary men and women crisscrossing the country, going to every single solidarity group in South Africa, from the Palestinian Solidarity Association to the South African PDS Coalition to Africa for Palestine to the South African Jewish Voice for Palestine. Every solidarity group to come together and have a boat sail in their name. Due to limited resources, we couldn't realize that. We also tried to club by metros, Cape Town, Durban, and Johannesburg. Still, we couldn't realize that. With the assistance of our donors, we were able to procure a boat for 115,000 euros, which was a boat we bought through our comrades in Tunisia from Monastir, and we had it taken to Tunisia. But why was it important for us? जी खबर है कि ताइवान का एक ड्रोन तैयारा लापता हो गया। It is worth noting that we are a country born out of resistance. From the first settler colonialists that landed in the Cape in 1510, led by Francois Almeida, with the resistance of the Khoi and the San people. वाह जी वाह, हकीम साहब आज नहीं ना है, ड्रोन ही चोरी कर लिया आखिर। यार हकीम साहब ने क्या करना था ड्रोन का? ड्रोन ते बैठे कुत्ते नु कैसी दौड़ लाउनी मैं इतनी एडा जालिम आदमी खोता चोरी करके ले गया। अच्छा खुदराज खोता भूल पे इते बार्डर लंघ गया सी। हम आम से नहाउण गया उन्हां दा साबन चुक लिया। बंदा आग लगा के फिर रहा है देख मेरी खुद सोजी के upon our continent for the beneficiary of 7 colonial states, that being Belgium,
Germany, UK, Spain, Portugal, and Italy, France included. We are a country, just as Palestinians are being forced with an Israeli identity, we were forced to embrace a South African identity which was posed by Westminster. We sent a delegation in September 1909, led by President Dr. Walter Benjamin. खबर है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की 800 साल तारीख में पहली बार पाकिस्तानी ग्रेजुएट यूनियन का सदर मुंतखब। By Dr. Abdurrahman of APO. This delegation went to London in September 1909, rejected Westminster from establishing a union government of South Africa. They were never successful in their defense of indigenous South Africans. We, as this collective, acknowledge that past and that history. We left from the southern tip of Africa and went to the northern tip of Africa in Tunisia, because just like our founding father of our nascent democracy and our global icon went to Tunisia on the 27th of February 1962, because he knew very well, in order to effectively fight वाह जी वाह, एक खुशी वाली गल है जी। और क्या अता किया है, और कुछ हमारे अपने मीडिया ने वो गौर ही नहीं किया। ये भी आप यकीन कीजिए, ये तो आजकल लेके आ भी चुकी है। Senegal, Morocco, Algeria, as well as Tunisia. A global Sumud flotilla sailed on the 31st of August out of Barcelona. My comrade and brother Tiago wanted me to sail with the Brazilians, but our donors called on me to go with our fellow South Africans, and as a patriot, I could not deny that. And therefore, coming to Tunisia and being warmly received by the Tunisians, it showed a spirit of Ubuntu, and that Africa was united and speaking with one voice in support of the Palestinian struggle. But we had no doubts. और ये बहुत बड़ा काम है, ना सिर्फ ये कि President Ben Ali, on his visit to our shores, was given an order by our government for his in support of the refugees that were बोरी नहीं होता, ये बेरी होता है। वैसे बात सुने आफी, क्या आफी छोड़े इस बात को, देखिए किस बात को? आफी इस तरह ज्यादा गुस्से से ना आपकी जो अंदर हासे फंसे हुए ना, आई नो वेरी वेल। ठीक है, मैं आपका रोब बर्दाश्त कर लूंगी। आफी आपने भी अंगूठी पहनी, मैंने भी बटौनी नहीं बटौनी, तो इसमें देखने की क्या बात है। वैसे बात सुने आफी, क्या बात सुनूं मैं? ये जो आप ऊपर से गुस्सा करते हैं ना, आई लाइक इट, पर अंदर से आपके जो हाथ से फंसे हुए हैं ना, मुझे सारा पता है। But there were 20,000 participants that registered for this mission, and we had a few boats. With the boats that we had, which were totaling about 70 boats at the time, we found out that many of the boats that were being procured
particularly from our Turkish delegation, were fishermen boats and were not worthy for the mission, and therefore had to scale down in numbers. The boats that we had bought as South Africa, आपकी ये घनी घनी आईब्रोज एंड योर स्वीट मुंचा की कही था मुछानु मुछानु मुछाई गई थी और चाचा गई था. And we were certain that as a delegation of 10 we would all be able to sail. But with the realization of the challenges we were facing, we had to downscale. So some of our comrades had to take a position to be from the land support. And I want to thank you, comrades, for having been bold and say it was important for us to see the mission through. It was not about us as individuals, but it was about the Palestinians in Gaza. So Faisal, Jared, and Ilem, who's in Morocco, we will, on Nurain, who fell sick when we were there in Tunisia, we will forever be indebted to you as this collective. Because, and Irshad, we as a collective on our journey continued to draw strength from you. We relied on every information that you fed us from home to be able to communicate South Africa's position. What we embarked on, we knew that it was not going to be easy. And therefore, while we were in Tunisia, we found ourselves victims to the attacks of the apartheid Israel regime. The family boat, as well as Alma, were bombed on a sovereign state, that being Tunisia. But this was anticipated because we know very well that apartheid Israel has acted with impunity, attacking sovereign states, Lebanon, Iran. कि अभी आप केपी हाउस में हैं, किस हवाले से आए हैं जो वजीर आला का इस्तीफा है? देखो, खान साहब ने आज जो फैसला किया है कि केपीके की हुकूमत में कोई चेंजेस करनी है, तो केपीके की हुकूमत का जो चेंज खान साहब की तरफ से आता है उस पर पार्टी बैठती कोई फैसला नहीं करती, तवसील नहीं करती, बल्कि खान साहब के जो अहकामात होते हैं उन पर मन और अमल कराती है। अली अमीन साहब से मेरी बात हुई और अली अमीन साहब का इरादा है कि वो इस्तीफा दे दे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपना इस्तीफा आपके हवाले कर दूं, बट मैं इस बात का मजाज नहीं हूं कि अली अमीन साहब से इस्तीफा ले लूं। अगर खान साहब की हिदायत है जो हमारे पास पहुंच गई है और खान साहब की हिदायत है तो अली अमीन साहब अपना इस्तीफा खान साहब को पेश करें या आईन के आर्टिकल 1308 के मुताबिक गवर्नर को डायरेक्टली भेज ले कि मैं अपनी पोजीशन से इस्तीफा देना चाहता हूं। खान साहब की जो हिदायत होंगे उस पर मन और अमल होगा और 2/3 मेजॉरिटी अल्हम्दुलिल्लाह केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की हुकूमत होगी। खान साहब के ख्वाहिशात के मुताबिक हमारी in the attempt of trying to get to Tunisia. We were also joined by the 18 boats out of Tunisia, and we set sail to Greece. In Crete, we were joined by another 6 boats and 10 from the Italian flotilla. Comrades, if there's anything that we can be proud of and applaud is that as we called in the Freedom Flotilla in Istanbul that we want to see a wave of boats sailing to Gaza. The Global Sumud Flotilla has on record become the largest ever flotilla ever witnessed. But what is also
worth taking note is that a humanitarian mission was supported by the Italian Navy and the Spanish Navy. Even though when we crossed the yellow zone, they withdrew their ships. We were also accompanied by the Turkish drones that were hovering above us and feeding us information on a daily basis as we sailed closer and closer to Gaza. We thank the Turkish government, the Turkish people, and the NGOs, particularly TICA and the Red Crescent, that through the naval boats, they brought humanitarian aid onto the Alma boat. As we remained on the waters of Greece, the Greek government provided security and brought their naval ship with 2 coastal guard boats that were protecting us. But the family boat was sabotaged, and this was our command center where Tiago, Rima, and other comrades of ours were as the steering committee. We had to onboard them onto our boat as Alma, which I was on with Greta, Yasmin, and other members. But with us, 2 comrades, Zugiswa and Riaz, remained on our South African boat, Florida, which was named Anas Sheris, as well as Zahira and Fatima were on Amsterdam, with Zahira later being deployed to another boat. Which boat were you? Wahoo. Kerry was on Wahoo as well. So we set sail, focusing on fulfilling our mission. I want to be clear on this, comrade. वो एक एक्सप्लेनर आया ना, कोई वजीर आला इस तरह से कुछ बना लेना कि ये है कौन, क्या है ये. Humanitarian mission. It was a non-violent mission that sought to break the blockade and end the siege that has been ongoing for 18 years, enabling humanitarian aid to get to our brothers and sisters in Gaza. We anticipated 2 scenarios: that we will be successful in our mission and get to Gaza, or we will be intercepted by apartheid Israel. As we now know, we were intercepted on international waters, which is a violation of international law, maritime law, and a violation of our human rights. 47 of our boats were intercepted. Food sailed to Ashdod. On our arrival in Ashdod, जिस कॉलेज में पढ़ता था ना, मेरे अब्बू उसी कॉलेज में ना मतलब काम करते थे. लेकिन आप जब इंडिया गए तो आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए आई हूँ. आई जस्ट वांट टू नो प्रोसीजर एग्जैक्टली क्या है. प्रोसेसर नहीं,
जुगाड़। देखिए, या तो आप आम आदमी की तरह लाइन में लगकर turn any photo into a viral. Our comrade मैं ऐसे भी बैठ सकता हूँ। करने जाता मैं भाई तीज वार मैनू हो खाड़े विच डांग खड़ के हो खाड़े विच डांग खड़ के उथे हो गई लड़ाई भारी अर्जन वैली ने हो अर्जन वैली ने हो पैर जोड़ के गनासी अच्छा लड़का मिलना बड़ा मुश्किल काम है। सभी अच्छे हैं इधर, लेकिन मेरे साथ गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। नो भाई, आप क्या करती हैं ऐसा? करती तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा थोड़ा हाई मेंटेनेंस। नहीं, डंडा है मेरे पास एक्चुअली। जो तो ये आके कर रहा है मुझसे बात। देखना गोरिया माझे वाले शोर नील झंडे रे रोज उसकी आंखों में फैला एक कुदरती वसाइल अब जित बंदी गलत देखा या पलट माहौल बदलती है कैसे बुरी आफत तू बुरी आदत तू मुझे हिट करती है जैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ज़ाया सपने ज़ाया दुनिया झूठी लगती है सपना सच्चा लगता है छुप के तेरी बाहों में सब कुछ अच्छा लगता। लड़श बेखबर तकम इस्तो हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको न ज़ाया अपने। आज मैंने गुजारा। बशीर भाई, आपका सेटअप ये है। उसकी आंखों में फैला काजल बा काला सूट काला। सोशल मीडिया पर अपने मजहबी मिसबा वो बंदा था। होए पहली बार मैनू सोरा लेने आ गया, सोरा लेने शाहरुख खान की एक फिल्म थी जब तक है मान गया, तो आखिरी रात पहुंच गया। उमर गुल पाकिस्तानी टीम। Comrades, a people united can never be defeated.
that was illustrated in Ashdod.